Hello and welcome to the first episode of Misadventures of a Sneaker. A podcast that takes you to wicked destinations. Through must experiences, conversations, and kahaniya. I'm Godly. And I'm Revati. And in today's episode, we're going to take you to Barso Re Megha Megha Barso Re Megha Megha wala themed state, Meghalaya. And we have with us a very special guest who I totally believe should take up stand-up comedy professionally or at least as a hobby. Totally agree, huh? Chalo, let's welcome our first guest. Hi, Jigar. Hello, guys. So, Jigar is a great friend and we've done a bunch of masti bhare, wo monsoon, Maharashtra wale jo getaways hote hain. In fact, Jigar has traveled itna zyada, उसके पासपोर्ट के स्टैम्प्स वाले कंट्रीज तो कौन से बांग्लादेश, नाइजीरिया, युगांडा, तांजानिया, डीआरसी, कुछ भी लाइक ही इज गॉन यू हैव डन इजिप्ट, इराक, ईरान, कहीं तो और गए हो ना, ऐसे जॉर्डन, लाइक नेम मतलब ये भी गया हूं ना. आई वांट टू दिस कंट्रीज आल्सो. तो यूरोप भी बोल सकते हैं. आई हैव आल्सो बीन टू यूरोप तो तुम्हारे जितना नहीं किया है, बट या यूरोप अभी काफी बाकी है. वो तो सबका बाकी है. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक एक्सटेंसिवली ट्रैवल्ड गाय. सो आई वाज टेलिंग जिगर मिलते हैं कहीं, लेट्स कैच अप. जुलाई में कहाँ जा रहे हो? जुलाई में तो उसका वहां पे जा रहा हूँ, फिर अगस्त में कभी मिले, अगस्त में वहां जा रहा हूँ, फिर अक्टूबर में वहां जा रहा हूँ. सो एवरी मंथ. एंड जिगर हैज लाइक अ स्मॉल बेबी एज वेल. ओके, सो दे ऑल आर सच crazy traveling people. They do all kinds of travels. Nothing can stop these guys. So it's awesome to have Jigar around. मतलब invariably itinerary हम लोग exchange करते रहते हैं. वो वहाँ पे गए हो, वहाँ पे गए हो. We are like an exchange itinerary exchanging buddies. Yes. But of course तुम्हारी काफी detailed होती है. So I always take a lot of help from you. Likewise. But Jigar, to start off, first thing, welcome to our podcast. We call ourselves the Misadventures of a Sneaker, where we talk about a lot of stories, travel stories that you guys have been to. And we always ask our guests to choose their favorite holiday destination. For season 1, we are doing India, and you've chosen Meghalaya. So beautiful. मुझे तो मेघालय का नाम ही इतना सुंदर लगता है, like you're in the middle of clouds wala fanda. So you've chosen Meghalaya. But before that, Jigar, I know you very well. But many of our listeners do not, and not as Godly. तुम्हारा एक छोटा सा, we will do one small, not rapid fire, but a few questions just to know you better. Sure. वो क्या है? हैम्पर कहाँ है? हैम्पर क्या है? हैम्पर मिल जाएगा तुम्हारे रास्ते में. मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ. I know कि तुम्हारा वर्ल्ड नंबर 1 वाला रिकॉर्डिंग होगा. Shoot. So since Revati keeps mentioning that you're like supremely well traveled and all, you recall any one conversation you might have had with a fellow traveler in one of your trips which kind of stayed with you, or like which was absolutely bizarre or unique? So, of course, there have been many instances and, memories associated with travel. So this one stays with me has been with me for a very long time now. In fact, it was in one of the very initial, international travels that we did. So I think around 12, 13 years back, we had done this whole Europe trip for 21 days. Wow. And of course, usse pehle we had done Thailand and, those kind of places. But, there... This is like the trip, just Europe trip is always the special one. Yes. The first one anyways is a very special one. So when you go for that first Europe trip, you're very particular. Ki you download everything. And these are days when the internet was not so... available everywhere. Available. So we used to keep everything downloaded. The maps, the routes... all the preparation used to be much more stronger than it is now. Correct. I agree. And of course, you go for the first time, so wo bhi hai. So one of the first destinations where we landed was France. So this was, I think, not even Paris, thoda Paris se bahar ka area. Okay. So me, my wife, and a couple of my other friends were also there on this trip. And one of our friend knew French. सो कहीं पे भी हो ना, उसको हम आगे कर देते थे. अरे यार, यही है अपना सेवियर.
हाँ हाँ हाँ. So this was on one of the metro stations Hmm. in the outskirts of Paris, so not in the main area. So ऐसा था, it was not like a proper town of Paris. Main थोड़ा city सा जैसे नहीं remote था. था. हाँ, नहीं था वैसा. तो हम लोग थोड़ा लॉस्ट हो गए और हमारे मैप्स वैप्स है ना, वो they were not helping us. एकदम एक लेडी वहां पे स्टेशन पे खड़ी थी, एंड these guys dress very well, they look very अच्छे से, Elegant, polished and all. ओल्ड थी, मे बी इन अर्ली 50s और वो. तो हमारा चल रहा था पीछे कि अरे यार ये क्या है, कहाँ अटक गए, ये वो वगैरह वगैरह. एंड वी वर वेरी फार फ्रॉम पेरिस, एंड वी स्टेड इन प्रॉपर डाउनटाउन, तो हमको पहुंचना भी था. तो वो सब कन्वर्सेशन चल रहा था. फिर हमने सोचा यार गाइस, वी आर नॉट एबल टू फिगर दिस आउट, अभी किसी को पूछना पड़ेगा. तो हमने हमारे सेवियर को आगे कर दिया कि भाई तू पूछ क्या है. तो उसने चालू किया बोंजोर, एंड देन कुछ तो उसने फ्रेंच में बोला ये वो. तो वो जो लेडी थी वो थोड़ा सा ऐसे साइड पोज में थी, ये लोग बात कर रहे थे, हम लोग पीछे थे थोड़ा, वी वर अ फ्यू स्टेप्स बैक, और वो बात कर रहे थे. तो उसने पूरा फुल 180 डिग्री का टर्न मारा पहले. इसको तो कुछ जवाब ही नहीं दिया जिसने फ्रेंच में इतना सारा ज्ञान दिया. और मेरी वाइफ को पूछा एकदम से, तुम्हारे लोगों ने क्या जवाब है? गुज्जू आंटी थी. This is so cute. Oh my God, the outskirts of Paris. तो उसने मेरी वाइफ का मुंह खुल गया. वो जो मेरी फ्रेंड है जिसको फ्रेंच आती है, जिसने इतना सारा फाइट मार के, उसका मुंह खुल गया. और एक आई थिंक 5 to 10 सेकेंड्स का साइलेंस हो गया. वो आंटी को देख के लगा नहीं तुम लोगों के? नहीं. तो दैट लेडी वाज लिविंग इन पेरिस फॉर मोर देन 30 इयर्स. तो उसका पूरा लुक फील, उसका स्किन का टेक्सचर वेक्सचर जो भी बोल लो, वो सब मतलब यू कैन नॉट मेक आउट कि ये वो है इंडियन, और इंडियन में भी गुज्जू. तो उसके बाद तो उसने और वो दे रहा है द कच्ची गुजराती, ओके. कच्ची इसका गुजराती थोड़ा और अलग होता है. तो कथे जाऊ से, फिर तो कथे जाऊ से पे आ गई. और फिर वहां पे ત્યાં पर्स वर्स મળે છે, તમને खपे तो लो. सो ये खपे तो लो तो फिर हमारा पूरे ट्रिप में चला था. सो खपे तो लो खपे तो लो इज अगर तुमको जमता है तो लो. इट्स लाइक कच्ची गुजराती. ये ट्रेन में भी मतलब ये ट्रेन भी है, ये ट्रेन भी है, तो तुमने खपे तो लो. ये ट्रेन जी जमता है तो ये ट्रेन ले लो, जमता है तो वो ट्रेन ले लो. तो वो एकदम उसमें भी वो एकदम लोकल में आ गई, और उसने फिर पूरा हमको समझाया. तो उसके बाद फिर वो जिसको फ्रेंच आता था वो तो कहीं कुछ बोली ही नहीं. उसने बोला यार तो क्या होता है कि वो जो एक स्टोरी है ना कि वो मून पे गया तो कौन मिला, तो वहां पे गुच्चू बेच रहा था कुछ ना कुछ. there's this some joke, some random joke. You can find Gujaratis in every corner of wherever you go. Exactly. So ये करता है, मैं सोच दी कि क्या होने वाला है, ये क्या बोलेगी. और उसने जो उसको इग्नोर मार के जो टर्न मारा ना, मतलब वो साइड पोज में थी, ये पूरा ज्ञान दे दिया. उसने उसको पूरा इग्नोर मार के, पूरा टर्न मार के मेरी वाइफ को क्या जरूरत है तुमने लोगों ने. So it was one of the very unique things, and I mean that's how it is. Mostly wherever you go, I have always seen that it just works out. There will be somebody who will help you, and they'll ensure that you reach to the place, or you find the place, or whatever it is. This is my universal belief. कुछ ना कुछ मिल ही जाता है. इटली में एक बार हमारे साथ हुआ था. We were in a tram and we were looking at the maps and all. It was a full packed tram, and हम लोग सब देख रहे थे, figure out कर रहे थे ये वो. Again, those days when that always on internet is not there, so you try to keep that in your mind and all. So this guy must be looking at us that these guys are वो बंदे ने ना फोन किया. Okay, he called up somebody. Okay, spoke to that person in Italian, and then suddenly started giving the phone to me. ऐसे as if बात करो. I was shocked कि क्या हो रहा है. मैं थोड़ा डर भी गया कि correct because Italy में you have always the fear of pocket chori and all of these things. तो फिर वो फोन उसने दिया, तो सामने से वो इंग्लिश में बोला, hey guys, I think you guys are looking for that place. कुछ तो लैंडमार्क था. So मैंने बोला हाँ. तो
तो उसने बोला कि the place where you are, इसके बाद 3 stop है, उसके बाद you should get down there and then you can take that place and all. I This mean, is so sweet. we have not even asked him. It is just that he figured out that these guys are trying to figure out something, and he did this because of course उसको नहीं आता था, but उसको पता है कि उसके दोस्त को English आता How है. sweet. This is Yeah. like going out of the way हो गया ये तो. Yeah. So Yeah. so this invariably happens. I don't know. Maybe I have not had bad experiences till now. A lot of people also talk about that. But so yeah, these are two I really very like it. unique, Yeah. very unique instances where I remember when Mhm. in my trip of Italy also we met. There were, so Italy has a lot of immigrants and lot of migrants Yeah, and illegal yeah. immigrants and all, and many of them are from Bangladesh. Yeah. तो चलते फिरते मैं कहीं किसी को बंगाली बोलते हुए सुनूंगी तो मैं कुछ तो एक सेंटेंस बोल ही देती हूँ. Oh my God, उसके बाद आपने हो बंगाली and then you'll be तुम वहां पे जाके शॉपिंग करो, यहाँ से जाके ये खरीदो, उधर से जाके वो करो. So even I have had like fabulous experience. So yeah, Awesome. I think these are two very unique experiences that I remember. 100%. Yeah, so Godly, sorry I took some more time to your I love it. question, बहुत but ही अच्छा कहानी था ये. Perfect. Awesome. Godly, do you have another question for Jigar? Yeah. So many times Revati's friends come. I'm sure you might know some of them. And they shared some of these travel experiences which are very, very filmy, like, or really dramatic. So I wanted to know if you had such any kind of those experiences where it was mega drama or like super filmy type. Jigar is the drama. I'm telling you, like wherever the group goes, we will always create a scene from something. Like हम लोग उछलेंगे ऐसे. We'll all stand in like one weird pose somewhere. Like we will create the reels, we will create the drama. Yeah, it's more like that. That is true. Of course, from that perspective, yes, in fact, ये Europe trip का ही हमारा एक मस्त ड्रामा होता था. That used to be with our friends who were with us. तो उसमें क्या था कि पहली बार यूरोप जा रहे थे और ऑफ कोर्स मतलब चिंदीगिरी तो हाईएस्ट लेवल की थी. सो उसमें एक एंगल था कि वी विल ट्रैवल लाइट. तो क्या हो गया कि हमारा जो दूसरा फ्रेंड, मतलब वो हस्बैंड वाइफ थे वो लोग, बोथ ऑफ देम हैड ओनली वन बैग फॉर देम फॉर अ 21 day trip. 20. My God. So अब होता क्या था, ऑफ कोर्स यूरोप पे यू चेंज आल्सो प्लेसेस वेरी मच. यू लाइक ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन तुम ट्रेन पकड़ोगे, कहीं जाओगे, ये वो वगैरह वगैरह. तो रोज सुबह का ड्रामा था. पहले तो बैग बंद नहीं होगा. नहीं, पहले तो सामान ही नहीं मिलेगा. किसका सामान किधर है, क्या है, वो पता नहीं है. उसके बाद फिर बैग बंद नहीं होगा. तो बैग बंद करने के लिए सब लोग बैग के ऊपर बैठ रहे हैं वन बाय वन, ताकि वो चेन बंद हो. फिर उसके बाद भाग रहे हैं 2-3 बार. तो अब ऐसा हो गया कि फिर हम लोग आगे निकल के कि यार तुम लोग देख लो, बैग बंद करके अगर हो जाए तो आ जाना. तो वो फिर दौड़ रहे हैं स्टेशन के बाद. तो फिर वो चल रहा है. तो ये मतलब है ना, एक ऐसा एपिसोड टाइप ड्रामा था कि पूरा 21 दिन अलग अलग कंट्री में रोज यही चल रहा है. बहुत गाली पड़ी होगी तुमको. उसके बाद उन्होंने, आई थिंक इट्स कितना, अभी 11 साल हो गए उस बात को. सो दे हैव एंश्योर्ड कि वो एक दिन के ट्रिप पे भी 2 अलग अलग बैग लेके आते हैं. Yeah, बेचारे दोनों. My God, very nice. मजा आ गया सुन के जिगर. Yes. Okay, perfect. Vacay for the day. Jigar, so you've chosen your favorite destination as Meghalaya. Yeah. I remember when you were planning for this trip, you had asked me some 4 अलग itinerary. मुझे इधर का बताओ, उधर का बताओ. End में, मतलब he asked all parts of India. Okay, he had, I think, not asked anything about northeast side. बाकी सबने पूछा एंड में तुमने मेघालय कैसे प्लान किया और क्यों प्लान किया? You're right, Revati. Actually, this was a very, very sudden trip. This is a trip where, of course, like as Revati mentioned, we have a 6-year-old daughter and a 1.5-year-old daughter. So it's not like कि मुंह उठा के कहीं पे भी चल दिए types, gone are those days. But this is a trip which we did like that. Like on day 1, we had booking of hotel only for day 1. एंड देन धीरे धीरे रोज सुबह उठ के चलो भाई आज का होटल अब डिसाइड करो, कल का होटल डिसाइड करो. Seriously? It was a trip. Yeah. It was a trip like that. Wow. So yeah, and as you mentioned, basically क्या था कि हमको एक पीरियड पता था कि ये पीरियड में थोड़ा लल है, from a office perspective, school perspective,
एंड ऑल दैट, तो कुछ ना कुछ करना है, बट वो जीरो इन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मई में क्या गर्मी बहुत होती है. वेयर डू यू वांट टू गो जहाँ पे गर्मी ना हो, प्लस इंडिया के बाहर नहीं जाना है. नॉर्थ में बहुत बार हो गया, जैसे पिछले साल ही हम लोग 2 ट्रिप नॉर्थ के कर चुके थे, तो वी डिडंट वांट टू गो टू नॉर्थ. देन फाइनली we zeroed on this. So in fact tickets भी like we went on Friday and we did the ticket on Monday. वाओ, मेगा तो लास्ट मिनट. हाँ हाँ एकदम लास्ट मिनट था. So the whole idea, Revati, was that it's reasonably cold. Cold तो नहीं बोल सकते, but it is not that bad, मतलब Pleasant. May के point of view से. Hmm. And it's a good time. Of course it's not the peak monsoon, so the water in the all these falls is not to that full glory, Hmm. but still it is pretty good. And now that I have gone, I can vouch for it that it's really good. So वो था. Lovely. Of course एक चीज था कि वो काजीरंगा बंद रहता है in Hmm. May. So 1st of May से काजीरंगा is closed. Kaziranga is not in Meghalaya, but normally you club that trip, True. Even because you land I in had Guwahati. clubbed it when I had been. So yeah. Correct. So yeah, so it was not there. Of course उसका एक story भी है, but yeah, at least जब planning stage में तो वो नहीं था काजीरंगा, because मई में बंद रहता है. But we thought ठीक है यार, कोई नहीं, काजीरंगा नहीं तो there is a lot of things to do in Meghalaya itself. It's I mean it's a good 7-10 days आराम से तुम कर सकते हो. In fact हमने कुछ चीजें छोड़ी है, ज्यादा दिन होते तो वो भी कर सकते थे. So that's how we zeroed on to it कि let's do it, and ticket booking flight का कर लेते हैं, बाकी सब फिर वहां जाके फोड़ लेंगे. Beautiful. So you did your in and out from Guwahati? Yes. So we had a Pune Guwahati return flight. बीच में 8 दिन, and then slowly वो 8 दिन एक एक करके प्लान होता गया. Amazing. मतलब really, like this is how backpackers do it, and you're doing it with kids. Phenomenal. Yeah. Awesome. So day one you land in Guwahati. Yeah. So How does it इसमें go? पहला वाला क्या हुआ, डे 1 से पहले है ना, उससे पहले ही पूना में हमको एक मस्त अंकल मिल गए. ठीक है, वो भी जा रहे थे इधर ही. एयरपोर्ट एंड पे? अंकल लोग, हाँ एयरपोर्ट पे, अंकल लोग मस्त होते हैं ना, उनके लिए एकदम मतलब ट्रिप पे जाना होता है तो पहले से ही ट्रिप पे तो वो मस्त, वो लंबा वाला 3/4 टाइप का बरमूडा नहीं होता है जो हम लोगों ने पहनना बंद कर दिया, लेकिन अंकल आज भी पहनते हैं. उनको कूल लगता है. वैसा टाइप का, हाँ उनको Very कूल cute. लगता है वो. टी शर्ट और वो उसके ऊपर वो ब्लैक कलर का बेल्ट, मस्त वाला, ऑफिस वाला. So cute. तो वैसे वाले अंकल थे. टोपी? तो वो सोच रहे थे हमको कि ऐसा ऐसा है ये लोग. ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे थे, हमको तो ऑब्वियसली प्लान करना ही था बिकॉज हमारा तो कुछ भी प्लान नहीं था. तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई, तो हमने शिलोंग का होटल बुक कर दिया था बिकॉज वी थॉट दैट विल लैंड इन गुवाहाटी, एंड गुवाहाटी से विल ड्राइव डाउन टू शिलोंग, एंड फर्स्ट डे विल बी इन शिलोंग. सो दैट वाज आवर प्लान. तो उन्होंने सुना, तो फिर उन्होंने बोला कि अरे आप लोग काजीरंगा नहीं जा रहे हो? तो उन्होंने बोला काजीरंगा तो बंद होता है ना मई में. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी खुला है काजीरंगा. Why? So वो बेसिकली क्या होता है कि इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन रेन्स, Okay. एंड डिपेंडिंग ऑन द रेन्स, अगर वो बीच में कभी कभी, जैसे फर्स्ट 2 weeks इट वाज क्लोज्ड, बट देन दे रियलाइज्ड दैट नॉट सो बैड, सो दे ओपनड इट फॉर व्हाटएवर 3 days 4 days वैसा. Oh. सो दे वर विद अ टूर, तो उनको तो टूर वाले ने बताया, तो दे, Oh. तो हमको ये पता चला कि ये हो गया. तो ये जैसे ही हो गया, फिर सब लोग को एकदम से अरे यार काजीरंगा खुला है तो हम जा क्यों नहीं रहे, ये वो. Correct. फिर हमने फ्लाइट वाइट बोर्ड कर दिया. फिर फ्लाइट हमारा फ्लाइट भी बहुत गंदा था, रात का फ्लाइट था. सो इट वाज अ 3 AM मॉर्निंग फ्लाइट फ्रॉम पुणे टू, Like international timings जैसे. हाँ. फिर उतरने के बाद जो है, हमने एक और चीज कर लिया था, वी हैड बुक एन एंड टू एंड टैक्सी कि भाई, Okay. जो कि मतलब पूरा 8 दिन Perfect. हमारे साथ ही रहेगा. Perfect. so that that thing is taken care of. So वो तो हमको वो लेने आ गया. तो हमारा टैक्सी ड्राइवर आज तक के मेरा सबसे बेस्ट टैक्सी ड्राइवर था. राहुल उसका नाम था. क्या नाम आई था? हैव राहुल. राहुल. Very nice. राहुल था. मतलब वो है ना, किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा, किसी भी चीज के Wow. लिए. होगा वो चीज, होगा नहीं, वो उसको भी पता होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ मैनेज करके जो होना होगा वही होगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें वो फील वैसा दिलाएगा कि तुम जो भी बोल रहे हो ना हम सब कर रहे हैं. अमेजिंग था Wow. वो. तो यहाँ जाएंगे, हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा. मतलब वो 5 घंटा दूर होगी जगह, ठीक है, तुम शाम को उसको बोल रहे हैं हाँ हो जाएगा सर. फिर ऑफ कोर्स वो तो तुमको भी रियलाइज हो जाएगा थोड़े कि टाइम के नहीं बाद. होने वाला बट है एटलीस्ट करके. बट एटलीस्ट तुम्हें वो, जनरली क्या होता है, वो टैक्सी ड्राइवर्स इतना मतलब खड़ूस. अरे सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अभी हमारा टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया. तो इसका एक अमेजिंग फंडामेंटल था कि मैं किसी भी चीज में मना नहीं करूंगा. समय के साथ इनको अपने आप समझ में हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये मना ही है.
most realistic optimistic का mix है बंदा है तो solid. बस हो जाएगा और वो he was like कि you know मोटा मोटी हम ये कर देंगे, मोटा मोटी सर सब कर लेंगे, आप चिंता मत करो. Oh, that was his favorite phrase. हाँ, मोटा मोटी हम सब कर लेंगे, चिंता मत करो सर आप. और फुल टाइम गुटखा खाता था, वाह. तो मतलब कुछ भी जो बोलेगा वो समझ में नहीं आएगा, तुमको आधा रिपीट वर्ड्स करके उसी में बोलना निकल पड़ेगा. जाता है ना. हाँ, उसी में निकल जाएगा और ऐसा दरवाजा खोल के थूकता रहेगा. Oh God, very exciting. बहुत ही interesting character. I know. तो और अनन्या, सो माय 6-year-old डॉटर, वो थोड़ी थोड़ी देर में, पापा ये बार बार डोर क्यों खोलते हैं अंकल. पूरे ट्रिप पे ये लाइन है ना 10 बार, पापा ये बार बार डोर क्यों खोलते हैं अंकल. तुमने जवाब क्या दिया? मैं बोला नहीं वो थोड़ा कभी कभी उनको हवा का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी एवरी टाइम कुछ नया जवाब दे Some देते new हैं. reason Let's every leave it. time. My God. तो हम Very लोग वहां nice. पे लैंड हुए और हाँ. लैंड होने के बाद फिर गुवाहाटी पे कि भाई अभी क्या करना है, तो ये वो, तो दिशा का तो क्लियर था, तो माय वाइफ नहीं नहीं काजीरंगा तो जाना ही है, अभी जो भी है खुल गया है तो वी हैव टू गो. यहाँ आके काजीरंगा नहीं है कैसा लगेगा. Correct. मैं बोला कैसा क्या लगेगा यार, हमने सब बुकिंग कर दिया है, ये है वो है. बोले नहीं नहीं कैसा अभी कुछ नहीं, लगेगा? जाना ही है. तो इनका क्या है, ये तीनों का कैसा, ये जाने का बोल के इनको तो क्या है, बैठ जाना है, ठीक है, फिर बाद में उसका होटल कैंसिल करना उधर है, का इसका होटल, होटल इधर का करना है, ये सब होटल. तो मेरे को करना है. Oh, you're the logistics in charge. या तो फिर ये इनको बोला हमने, अगर किसी और को बोले ऐसा कि भाई ऐसा है शिलोंग का हमने बोला है और अभी तुम काजीरंगा ले लो, ड्राइवर का तो वहीं पे, बट ये ही वाज वेरी कोऑपरेटिव. हाँ, हाँ मोटा ठीक मोटी है हो सर, ठीक है जाएगा. ठीक है, मोटा मोटा हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, 7 घंटा दूर है वहां से, गुवाहाटी से. वाह. तो वो उसने गाड़ी चलाना चालू कर दिया और फिर हमारा डिस्कशन चल रहा है. फिर उसने थोड़े टाइम के बाद बोला कि सर अभी है ना एक 20 मिनट के बाद एक पॉइंट आएगा, वहां पर हमको डिसाइड करना है कि काजीरंगा जाना है तो सीधा जाना है, और अगर शिलोंग जाना है तो लेफ्ट जाना है. तो he तो was मैं बोला यार overhearing 20, all your हाँ हाँ confusion. हाँ, Best. तो मैंने बोला कि 20 मिनट में तो डिसीजन नहीं होगा, तो बोलते ठीक है एक काम करते हैं, वहां पे एक खाने का जगह है, मैं वहां पे रोक देता हूँ. ठीक है, आप लोग नाश्ता भी कर लो और वहीं पे सोच लो. अरे बेस्ट तो आदमी है राहुल यार. He gave you राहुल time भाई to एकदम think सुपर also. डुपर था. हाँ, राहुल भाई एकदम सुपर डुपर थे. तो मैंने बोला फिर होटल वोटल में मोटा मोटी सब कर लेंगे सर, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं फोन कर दूंगा, मैं आपको. सो ही वाज वेरी गुड इन ऑल दिस आल्सो, अच्छा, नेटवर्किंग बंदा फाइंडिंग था. होटल ये वो, एंड नॉट एट ऑल प्रेसी, मतलब होटल लेके फिर वो खुद बोल देगा कि सर आप ऑनलाइन भी देख लो, ये होटल मैंने पता किया है, अगर आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है तो ऑनलाइन. Okay. ही वाज नॉट लाइक दैट कट वाला आदमी कि मेरा कट है, ये है वो है, मस्त था वो बंदा. Wow, यार, तो nice. फिर सो देन वी हैड द ब्रेकफास्ट एंड देन तब हमने डिसाइड किया. फिर वो शिलोंग वाले को फोन किया, उसने बुकिंग का पैसा वापस नहीं दिया, बट एनीवेज वी सेड चक इट, अभी सबका मन है तो चलते हैं. ठीक सो है. दैट्स हाउ वी चेंज्ड आवर प्लान एंड वी वेंट टू काजीरंगा. इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, 7 घंटा लगता है ऑलमोस्ट गुवाहाटी से पहुंचते पहुंचते, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राइव. एक पॉइंट के बाद काफी दैट ग्रीनरी एंड ऑल The स्टार्ट्स. forest greenery. Yeah, that's forest area. वो रोड पे हाथी वाथी दिखेंगे, and हाँ. so that was nice. It was lovely, Was it which still was there. amazing road condition? I have been there like 10 years back, and the road No, condition it is good. from Guwahati to It's amazing. Kaziranga was phenomenal. Yeah, Oh, yeah. very It's good. They still have maintained still it. very good. Yeah, it's वाह. very good. नहीं तो हमारा एक्चुअली द अदर प्लेसेस द रोड्स वर नॉट दैट गुड, तो हमने ड्राइवर से एक्चुअली पूछा था कि ये रोड इतना अच्छा कैसा है, तो ही सेड कि यहाँ सबसे ज्यादा फिरंग्स काजीरंगा ही हाँ आते हैं, तो इसीलिए हाँ. आई मीन दे मेक इट अ पॉइंट टू मेंटेन द रोड सो वेल. Yeah. वेरी So फिर नाइस. हमारा ऑन द वे राहुल भाई ने होटल भी कर दिया. We went ahead with whatever he said, and then we reached there. उसने हमारा आफ्टरनून का सफारी भी कर दिया. So there's as you know in Kaziranga there are these two safaris. There's that morning safari and the afternoon safari. So we reached by that time. तो हमने आफ्टरनून सफारी के लिए we booked it. Yeah. And उससे पहले हम लोगों ने एक बहुत अच्छा लंच किया वहीं पर. सो नॉर्थ ईस्ट में हमको खाने में बहुत मजा, आई मीन सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, बट मेघालय प्लस इधर खाने में बहुत मजा आई यार. एज Oh, वेजिटेरियंस nice. आल्सो नाउ वी लव्ड इट. So they have this thali culture na, everywhere there's this thali, Assami thali या that Meghalaya thali. Oh यार अमेजिंग होती है वो थाली, क्या मतलब अलग होता है फ्रॉम अदर so rice is the key. So rice is the key. So हम्म. एक तो राइस उनका अलग रहता है, वो मोटे दाने वाला राइस रहता है. देन एक बनाना फ्लावर का सब्जी रहता है. ओ. So that's amazing. That's really amazing.
dal रहता है, which is little prepared in a different way, little bit taste of mustard and all in the dal. Okay. So it's different than our whether the West India dal या North Correct. India dal. Hmm. So वो रहता है, थोड़ा fresh बनाते हैं वो लोग काफी चीजें. Lot of different types of chutneys, you know, bamboo shoots का chutney and एक axiom करके कुछ उनका एक रहता है. So lot of fermented things, you know, they use soya bean and then they ferment it. So basically क्या है, the flavor ना is very different. You know, you will not have that kind of flavor in other parts of the country. So we really had amazing time. So हमने वहाँ पे वो Assamese थाली खाई because of course Kaziranga is part of Assam. Yeah, so it was amazing. We had all of us had great fun there. And then we went for the jungle safari. So it's amazing, really. I mean, of course, Revati, you must have also seen that. I loved it. Yeah, the best part is, no, it's very different from many of the other safaris that are there in the country. So see, the biggest thing is that the forest is more like plains, you know. Correct. It's not like it's not like a dense forest. So you know, I mean, जैसे ये Kenyan safaris जो होती है, okay, उसमें भी क्यों बहुत ज्यादा मजा या different feeling आता है, because it's like plains. Of course वहाँ पे जानवर बहुत ज्यादा होते हैं. You know, in that plain there'll be like some, you know, whatever 20-25 giraffe and 20-25 elephants and all that. Zebra यहाँ पे उतने, and lions and everything like that. Yeah. यहाँ पे उतने सारे animals नहीं है, but the what I could sense was that it was very similar to that, you know, because there's plains and then इस plains में तुमको rhinos दिख रहे हैं या छोटे वाले elephants दिख रहे हैं, तो which is very different from a Kana Kisli or a Ranthambore or a, you know, whatever ये अपना Jim Corbett. Absolutely, yeah. तो वो मस्त था यार, वो really amazing था, मतलब you know, we really loved that. Of course rhino तो एक अलग ही प्राणी है यार, इतना क्यूट, मतलब उसके ऊपर ऐसा बॉडी पे ऊपर कवर लगाया हो ऐसा लगता है, you know, it's like as if he is wearing a मतलब उसका वो अलग है और अंदर बॉडी एक अलग होगी ऐसा लगता है. बहुत क्यूट होते हैं, मुझे बहुत क्यूट लगता है. They're very cute. So that was very nice. So you know, we really had a good time in that, and it's good that we took that impromptu decision to change our plan and go there. जाके दिशा को थैंक यू बोलो. Yes, of course, दिशा को तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा. दिशा को तो यार पूरी लाइफ के लिए थैंक यू है. ये सब फालतू डायलॉग मत मारा करो, ठीक है? स्पेसिफिकली जाके थैंक यू बोलो. So it was amazing, and of course we also saw other animals like the deers and elephants. So वहाँ के elephants थोड़े छोटे वाले elephants होते हैं, तो अच्छा लगता है वो. They are cute and the kids loved it. बहुत दिखे? बहुत नहीं दिखे, because actually क्या होता है कि ये end of the season में ना थोड़ा अंदर चले जाते हैं. So बहुत नहीं दिखे, but yeah, I mean, it was decent. You know, we had a good share of like I saw 150-200 rhinos and all that. बहुत सारे दिखे थे हम लोगों को. वो टाइमिंग पे है ना, कुछ और दिखाओ था. हाँ, so we went towards the end of the year, November December में कभी गए थे. Yeah, so that's like winter ना, proper एकदम बढ़िया वाला टाइम है. ये थोड़ा क्या समर में हम लोग we did an elephant safari in the evening and jeep safari in the morning or something. So elephant safari में our elephant went really close to a rhino, like really close. So we were telling the Mahot guy कि कुछ ज्यादा ही पास में नहीं आ गए क्या, और हमारा they name all their elephants, right? तो हमारे elephant का नाम राहुल था. तो डूब बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, राहुल किसी से नहीं डरता है. We like, oh, this is so cool the way he's like, चिंता मत कीजिए, राहुल किसी से नहीं डरता है. We like, हमको तो डर लग रहा था because we were really close. तो बहुत क्यूट था यार. We had really nice time. And बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, मतलब I would say really everyone should experience it because it's very unique. So वो मस्त था. Kids also loved it because you know, Ananya and Arya both loved it. Arya तो एकदम पागल हो गई, मेरी छोटी वाली है 1.5 साल वाली, तो हिरन वीरन और ये सब को देख के एकदम मस्त उसको मजा आ गया. So cute. Yeah, so it was good fun. Very nice. Yeah. So then you stayed for just a night in Kaziranga? Yeah, so we just stayed for a night. वैसे भी उस दिन फिर we were too tired. Correct, I know. I was going to ask you all. मतलब पूरे रात को सोए नहीं होगे. Directly you have driven 7 hours and gone to Kaziranga. फिर directly went out for safari. किधर में रेस्ट लिए हो भाई? Yeah. But yeah, we are. Would have been tiring. Yeah, so we are little like that. थोड़ा busy traveling वाला अच्छा लगता है. We are not that leisure वाला
ट्रैवलर्स, या वो करते हैं वो अलग है, फिर वो करना है तो फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट लेके कुछ मत करो, फिर पड़े ही रहो. Yeah, correct. Don't do that in a place where there is something to see, is what our philosophy is. Yeah. So वो था. रात को भी बहुत मस्ती की. रात को हमने डांस पार्टी की, तो आर्या डांस्ड सो मच, तो मजा आया निवेदिता के साथ. तो Like तुम उसने लोग कुछ you guys dance, or you had the tribal dance thing happening or something? वो हमने नहीं देखा था. It was नहीं there at देखा. 6:30, but then we हाँ, were too tired and too all. tired. सबको लगा घर जाते हैं, और घर पे ही ट्राइबल डांस था, तो फिर सोचा क्या बाहर करना. Yeah, you have monkeys at home, so why go outside? Yeah. So वो रहा. So then next day morning we left Kaziranga and we drove down to Shillong, which is again a very long journey, around 7 hours के आसपास. Okay. So that was nice. वो journey भी ठीक ठाक हो गया. रास्ते में हम लोगों ने एक जीवा वेज करके एक बहुत ही लेजेंडरी रेस्टोरेंट है शिलोंग के पास. So that's the only veg restaurant, proper veg restaurant on the highway. तो इसलिए वो बहुत ही फेमस है. और we were so surprised, हाईवे के रेस्टोरेंट पे 45 मिनट्स का वेटिंग था. Wow. तो हम लोगों ने पहले तो राहुल भाई ने तो बोला कि यही है, खाना तो यहीं पड़ेगा. हमने बोला नहीं नहीं यार, कहाँ वेट करेंगे, चलो अभी आगे चलते हैं. तो उसने मना भी किया बेचारे ने कि नहीं हो पाएगा, आप यहीं खा लो, कोई बात नहीं, वेटिंग है तो वेटिंग करेंगे. फिर हम आगे गए, थोड़ा कुछ मिला ही नहीं. फिर 2-3 जगह हम वी वर ओके टू गो इवन टू अ प्लेस वेयर देयर इज नॉन वेज, मतलब वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन इशू, बट कुछ भी नहीं मिला. फिर उसने बोला कि अभी वापस ले लेता हूँ मैं जीवा. तो फिर अच्छा हम आदमी है वापस यार, आए. he came back and all that, वरना Yeah, attitude आ जाता है. so we came back and we had of course very good food. Anyone who's इतना traveling, legendary कि 45 minutes waiting on a highway restaurant. yeah. और लोग बैठे भी है. Very So nice. if you are on the highway, it's worth it. Yeah. Okay. So then we reached Shillong. रास्ते में हमने शिलोंग का होटल बुक किया on the way, because हमारा पास रहने की जगह तो थी नहीं. फिर बट हमारे राहुल भाई थे, कोई बात नहीं सर, मोटा मोटी सब कर लेंगे हम, चिंता मत करो आप. ये बेस्ट आदमी है, इसका नंबर देना, हम लोग डालेंगे ऑफ group कोर्स में. राहुल का नंबर ले लो, जिसको भी जाना है यू शुड Yeah. कांटेक्ट हिम. थोड़ा लल्लू बनाएगा, बट इतना प्यार से लल्लू बनाएगा कि तुम्हें अच्छा लगेगा. तो फिर क्या बोलते हैं कि वी रीच देयर. सो देन अगेन वी थॉट कि अभी कहाँ होटल जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो वी स्ट्रेट अवे, बिकॉज क्या है शिलोंग में एवरीथिंग क्लोजेस वेरी अर्ली. So everything is out by like parks and all those things will be over by 5-6. So then we straight away went to that Ward's Lake, which is there. So it's a lovely lake. It's very beautiful. It's of course it's not natural. It's an artificial lake, but it is lovely. It's very very pretty. And we reached at the right time. Evening था, थोड़ा सा foggy और वैसा वाला weather था. मजा आ गया. We had a very nice boating over उसका there. the park around is also very beautiful ना, वो लेक का जो पार्क भी बहुत सुंदर है ना. Yes. So in fact, if you see for the boating, you have to go through the park and then only you can reach. बीच में एक ब्रिज है, बट वो बंद था for some reason. वो बहुत pretty पूरा bridge है, white park, color का सुंदर सा bridge. I know, but वो उन्होंने कुछ, I think there was some construction or something going on. So then we took the whole park, walked around, and then reached there and had a very nice boating in the evening. Perfect sunset आया. boating वाला feeling ना. I love it. I love boating anyway. It's so nice. Yeah. So it was lovely. मजेदार था. Very nice. And उससे पहले हम लोग ना, just before that we had gone to a park which is called the Lady Hyderabad Park, which is there next to it only, वहीं पर है. So that's also a very nice park. It has a small zoo also inside it, and zoo में fox था. And we were just talking, all of us, there are very few zoos which have fox. इनफैक्ट हमने बड़े बड़े zoos देखे, बट उसमें fox नहीं है. इसमें ऑफ कोर्स 4-5 ही एनिमल्स है. या तो मजेदार, वो मजा आ गया. fox देख के बहुत मजा आया. The kids also loved it and we also loved it. So उसमें एक मस्त फनी सीन हमारा हो गया था. तो दैट पार्क क्लोजेस एट अराउंड 5:30. तो हम लोग कुछ 4:30 बजे पहुंचे और बाहर गेट पे खड़े थे. टिकट ले ली थी हम लोगों ने. तो वहां पे है ना, फ्रूट्स आर वेरी गुड इन शिलोंग. सो वहां पे ना एक वो छोटी छोटी बेरीज मिलती है. आई डोंट नो व्हाट दे, इट्स नॉट रास्पबेरी, इट्स नॉट स्ट्रॉबेरी, इट्स समथिंग, सम अदर बेरी. इट्स लवली, इट्स जस्ट अमेजिंग. और पाइनएप्पल बहुत अच्छा मिलता है. सो कटा हुआ पाइनएप्पल वो लोग रखते हैं. इट्स वेरी नाइस. हमने तो बहुत पाइनएप्पल और वो बेरीज खाए. तो
वो चालू किया, वो 30 का एक छोटा पैकेट होता है, 1 2 3, तो मतलब बाहर खड़े हैं टिकट लेके और हम इसमें खाने में लग गए पूरी तरह से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, खाना वेरी फाइनली इंपॉर्टेंट। फाइनली वो गेट कीपर ने थोड़ी देर के बाद बोला कि अगर यही चलता रहा ना तो पार्क बंद हो जाएगा और अंदर से फिर आप जा नहीं पाओगे। हिमाचल रियलाइज कुछ ज्यादा ही खाता पीता गैंग है ये। वार्निंग दे देता हूँ। तो अंकल ने मस्त हमको समझाया कि भाई पहले जाओ, ये वाली आंटी यहीं बैठे रहने वाली है लेकिन पार्क बंद हो जाएगा। तो फिर हम लोग अंदर गए, बट फिर अंदर वाले अंकल ने भी बहुत सीटी बजाई बाहर निकालने के लिए हमको, क्योंकि हम लेट तो हो ही गए थे। तो वो एक And they had एक to जगह close सीटी the बजाते place. थे, हम दूसरी जगह चले जाते थे, वो वहां आके सीटी बजाते थे तो हम यहाँ आ जाते थे। और इतने सच नहीं अ तो बिग और पार्क क्या? it's reasonably size, not a Oh, very big park, reasonable size park and good, oh, बीच में lovely. फाउंटेन है, Hmm. बीच में फाउंटेन है। This small zoo is also very nice. Hmm. मतलब भालू है, अच्छा there's a भालू in it, you know. In fact that's also Wow. very rare. बेयर वेयर कहाँ होता है, तो अच्छा मस्त वो काला वाला, हाँ, तो करेक्ट। बढ़िया। तो it was nice, it was a good small park with a small zoo and अच्छा था, मजा आया। तो वो करके मौसम बाद हम कैसा लोग, था? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, आई थिंक बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, आई लव ओवरकास्ट थोड़ा इट। बहुत रहता था, बट गुड, वेरी अच्छा था, नाइस कोई यार। मेजर अरे इशू ऐसे नहीं था। मौसम में गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स इन अ पार्क इज सो नाइस। या हाँ, या वेरी इट नाइस। वाज हाँ। गुड। Okay, so this you went to this zoo wala park and you went to the main wards या lake. या सो देन देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड पुलिस बाजार, आई एम श्योर यू Very, मस्ट बी, yeah, दिस द the main सेंट्रल bazaar, no? एरिया, या द मेन बाजार वेयर एवरीथिंग इज देयर। तो हमने वहीं पे बाजू में कहीं पे, हमको राहुल भाई ने रूम्स दिला दिए थे, तो वहीं पे थे हम लोग। तो फिर रात को हम लोग पुलिस बाजार गए। So there is one very legendary restaurant in Police Bazaar. The name of the restaurant is Trattoria, and they give thalis. So Okay. basically, this Meghalaya has different tribes. Hmm. So one of the key tribes over there is Khasi tribe, Hmm. Khasi and Garo. So actually, Meghalaya is very big. There's another part where you can do a separate another trip, which is on the western side of Meghalaya. क्योंकि ये जो पूरा ये तो east ही है खाली. Hmm. So Yeah. Garo is there and Khasi is here. Hmm. So ये सब खसी food है. Of course, it's more non-vegetarian dominated. They eat a lot of pork Okay. and fish and all. So एक जाडो करके इनका एक famous dish है, which is rice with pork. Oh. तो वो सब है, तो उसमें वेज थाली भी वो देता है, तो अमेजिंग है वो बंदा, मतलब उसका बेस्ट है। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, Hmm. वो वहां पे भी सब है ना, 7:30-8 बजे सब बंद हो जाता है, एवरीथिंग इज Correct, क्लोज्ड, correct. 10:38 इज इट्स ऑफ। Hmm. तो उसको फिर मैंने फोन किया, तो वो बोले बंद हो गया है। वो भी इतना बढ़िया बंदा था ना, उसने इतना लंबा चौड़ा बात किया, मतलब आइडियली व्हाट इज दिस कॉल, हेलो आप खुले हो, नहीं मैं बंद हूँ, ओके बाय, दैट्स द कॉल, Correct, राइट। correct. सो ही इज लाइक, ओ आप नहीं अभी आए हो, कहाँ से आए हो, मैं बोला हम लोग पूना से आए, ओ अच्छा, तो कल रुकने वाले हो क्या, मैं बोला नहीं कल तो हम लोग चेरापूंजी जा रहे हैं। तो बोल रहे नहीं फिर कैसे करेंगे, फिर उसने बोला कि वापस तो आप लेकिन शिलोंग होके ही जाओगे ना, व्हेन यू आर गोइंग बैक। मैं बोला हाँ तब हम शिलोंग होके ही जाएंगे, तो बोले तब आप आओ, आई विल फीड यू वेरी वेल, यू विल रियली एंजॉय दिस, How प्लीज डू। sweet, यार. My God. अमेजिंग था वो, मस्त था वो बंदा एकदम। तो My God, उसने, कौन ऐसे सब करेगा? Very nice. आई नो वेरी नाइस, तो उसने पूरा बोला, उसने बोला आप तब आना, यू विल रियली एंजॉय दिस। तो मैं बोला ठीक है। So then that did not work out, but we had street food. So street food is also very nice in Police Bazaar. It's Oh. lovely. क्या सिर्फ तो मोमोज जैसे कि और कुछ? मोमोज तो था ही, ऑफ कोर्स मोमोज खाया, एक है ना वो पराठा सब्जी बनाते हैं वो रोड पे, so, बच्चों के लिए इट वाज नाइस, वेरी Oh. नाइस पराठा। इट्स स्टफिंग वाला पराठा होता है, उसमें Okay. आलू दाल डाल देते हैं एंड प्लस उसके साथ ग्रेवी वाला सब्जी देते हैं। Oh, सो रोड पे बढ़िया ही है. मिलता है वो। ऑफ कोर्स रोड पे और भी नॉन वेज का तो बहुत सारा मिलेगा, बट Hmm. दिस वेजिटेरियन ऑप्शंस यू आल्सो विल गेट, इट्स अमेजिंग। Very वहां nice. पर है ना वहां पर एक और मेघालयन कॉफी शॉप है, जो Okay. मेघालय बेस्ड कॉफी देता है। इट्स देयर ओनली एट पुलिस बाजार, यू विल What's फिगर इट आउट। different about it? It's amazing. The taste is very very different than your standard the cafes and Oh. नहीं, कुछ Starbucks and all. अलग. नहीं, What? Any idea? coffee is different. The Coffee coffee is is different. different. Yeah, it's nice. It's not very dark, but अच्छा था उसका वो। अच्छा So था. हमने Okay. तब भी हमने लिया, and then when we came back तब भी हमने फिर उसको लिया था. It was nice. Okay.
वो हमने गया, फिर हमने वो सब खाना पीना खा के थोड़ा बहुत वहाँ पे। अच्छा, शॉपिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, Hmm. स्पेशली फॉर विंटर क्लोथ। I bought some color things. I remember some color हाँ हाँ topi, color. But या what? Because you get all. I think that's या primarily what people wear there a lot. So you get a या lot of colors and या options. या Hmm. Very या nice. अच्छा था। सो वो करके वी एंडेड दैट डे। Yeah, that was Shillong. Next day we Hmm. started moving towards Cherrapunji. So that day was like, travel, see the things en route to Hmm. Cherrapunji, and then finally at the end of the day reach Cherrapunji. So that was the plan. Hmm. तो हम लोगों ने शिलोंग पीक गए पहले। इट्स अ Hmm. नाइस प्लेस, गुड व्यू पॉइंट है, प्लस वो अच्छा है वहाँ पे, यू गेट दिस खस्सी ड्रेस स्पेशली Hmm. फॉर विमेन। तो Flowers and the red color thing and all that. No? या सो इट्स वेरी नाइस। वो ऐसा पूरा है कपड़ा जैसा होता है, शॉल टाइप। और वो यहाँ पे एक शोल्डर पे वो लोग उसको Clip. बहुत ही अच्छा है वो, या क्लिप करते हैं उसको। हाँ, Hmm. गुड फन। Very शिलोंग important ट्रिप इज reel के लिए all these things are very important. ऑफ कोर्स ऑफ Social कोर्स। media, yo. यस यस यस, तो वो अच्छा रहा। Yeah. Then there's a very nice cafe. So all this is like in vicinity of Shillong only, मतलब Hmm. 25, 30, maybe 40 Outskirts kilometers. जैसे. Hmm. Yeah. So there's this famous ML cafe. Hmm. It's a bikers cafe over there. Very nice vibe. नीचे लो सिटिंग बैठने का वैसा एक रॉयल एनफील्ड पड़ा हुआ है। चिल करो, कॉफी पियो, ऑल दिस व्हाटएवर इंटरनेशनल Hmm. cuisine खाओ। तो अच्छा, हमने वहाँ पे 1.5-2 घंटा स्पेंड किया टाइम पास, फुल लंच करने के लिए। इट्स गुड, आई मीन Very वर्थ cool. इट। Yeah, I've heard about this place. I have हम लोग गए या नहीं थे, but I've heard about this biker या thing. या Hmm. सो ये भी हमको सजेस्टेड बाय Rahul bhai. राहुल भाई था। What a तो dude, man. What a या dude. तो अच्छा था। एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू दिस मॉफलोंग sacred forest. Hmm. It's an amazing place. It's really beautiful. Wow. uh, so starting में there's this plains, डलहौजी वलहौजी में कैसे plains है, Hmm. Yeah, just like greenery this like a greenery वाला stretch of. plains। Hmm. हाँ, तो अच्छा मस्त, and the weather was very nice, Hmm. overcast, and एकदम वो हल्का सा ठंडा ठंडा Hmm. फीलिंग वाला। Oh, lovely. Hmm. तो अरे यार, वो क्या बोलते हैं, वो जो ऐसे वो लंबे लंबे पत्थर जो आजकल बहुत फेमस है, हर जगह पे कहीं दिखते हैं। Like those stalactites type of rocks. हाँ 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 Hmm. हाँ, That's like, आजकल हाँ बहुत। हाँ. हाँ, तो वो वैसे रॉक्स है उस प्लेन्स में। तो दैट्स नाइस, इट्स गुड फोटो वोटो Did खींचने you के need लिए। to get a guide for going here? So it's included only. You have to take an entry Oh, fee. Along with अच्छा, that, you have to take a guide also. It's अच्छा. compulsory. मतलब it is Okay, all included only there. okay, okay. गाइड मस्त था, गाइड वाज अ कैरेक्टर। Hmm. तो गाइड एकदम ऐसा था ना, मतलब वो आप बताओ टाइप टीचर होती है ना बचपन में। आप बताओ आप बताओ, बेइज्जती करने में मजा आता रहेगा। उसको तो पता ही है तुमको नहीं पता है, लेकिन बार बार पूछते रहेंगे आप बताओ। फिर तुम ऐसे, नहीं यार मुझे तो नहीं पता है, फिर वो है करके ये होता है उसका मतलब। तो ये आया, फिर उसने बोला कि यू नो व्हाई दिस फॉरेस्ट इज सो फेमस फॉर। अभी सब खड़े हैं, नहीं मालूम है यार हमको तो। तो पहले तो है उसके बाद. करके बोल रहे रुद्राक्ष। सो वो रुद्राक्ष के लिए फेमस था, और वो ऐसे हाँ. बात करता था, यू नो व्हाई द फॉरेस्ट इज सो फेमस फॉर। थोड़ा ऐसा डांटता हो ऐसा भी लगता था। अच्छा. और फिर हाँ, तो बोलते रुद्राक्ष। हम्म. सो इट बिकेम अ लार्जर ग्रुप। तो एक बंदा था, उस तो काफी था, मतलब वो कुछ वो महंगे वाले रुद्राक्ष लेके आया था, तो उन दोनों की बहस चलती रहती थी। तो वो बोलता था कि नहीं नहीं, योर रुद्राक्ष इज फेक। तो बोले नहीं नहीं यार, हमने तो इतने में खरीदा है। यू नो व्हाट, यू नो हाउ टू टेस्ट रुद्राक्ष। तो बोले नहीं, फिर वो वैसे उसका पानी। तो मस्त था वो एकदम। Oh मतलब God. मतलब तुमको कुछ नहीं पता है, वो बार बार तुम्हें वो रियलाइज कराएगा, मतलब जलीलता की एहसास तुमको आधे घंटे के ट्रिप में बार बार दिलाएगा वो। Oh God. तो फिर वो मस्त उसने, और वो बात ऐसे अच्छा, पूरे टाइम पे हमारा प्रॉब्लम क्या था कि अनन्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वन, बिकॉज थोड़ा टॉपिक भी वैसा था। टू, उसका डायलेक्ट जो था या वो हाँ, बोलता जैसे था, accent is very वो different. समझ में हाँ. नहीं आ रहा था। हम्म. तो अनन्या का एक अलग चल रहा है, पापा शू बोले जे, यार शू बोले जे, मैंने समझाओ। So you have to keep on translating also. आई नो। तो वो अच्छा इंटरेस्टिंग था, मजेदार था। सो दिस इज इनसाइड द फॉरेस्ट। सो ऑफ कोर्स देयर इज द प्लेन एरिया व्हिच इज आउटसाइड। ऑफ कोर्स वहां पे कुछ गाइड या बताने वाली चीज नहीं है।
Then there is the dense forest after the plain area, जहाँ पे ये गाइड आता है तुम्हारे साथ Okay. एंड वो ये सब समझाता है. सो व्हाई इज इट कॉल्ड सेक्रेड इज बिकॉज यहाँ पे पहले ये खसी ट्राइब्स का काफी चीजें होती थी, लाइक बलि चढ़ाना एंड हाउ टू समथिंग रॉन्ग इज हैपेंड टू द ट्राइब और टू द एरिया अराउंड, देन उसको सॉल्व करने के लिए उसमें सब देयर आर सम स्टोरीज कि वो प्रीस्ट जाएगा एंड वो they'll cut an animal, फिर उसका ब्लड का Okay. कलर कैसे चेंज होगा उससे डिसाइड होगा गुड थिंग्स विल कंटिन्यू और बैड थिंग्स विल कंटिन्यू, ऑल दोस थिंग्स. द Wow. किंग Okay. विल बी देयर एंड ऑल्सो it has a lot Story of है, lot of story. so हाँ, so वो सब भी हमको ये गाइड ने बताया. So it was nice, so मजेदार था एंड गाइड भी मजेदार था. तो फाइनली हम लोग अपने आप को जलील करके बाहर आ गए. ऐसा फंडा है ना कि वहां से तुम कुछ भी लेके नहीं निकल सकते हो. हाँ, correct. So ऐसा that's क्या, another what is funda. the funda? So the funda is that you cannot take anything from that forest and come out. Otherwise, bad luck will come to you. Whether it is a leaf or a branch or anything. Rudraksh also, because Rudraksh to महंगा भी होता है. Correct. So that is the funda, that if you get something out, then it will bring a lot of bad luck to you. So you should not do. तो मैंने एक्चुअली वीडियोस देखा जब एक गाइड ने एंड में बोला कि आर यू श्योर तुम कुछ लेके नहीं जा रहे हो, तो उसने कहा नहीं. तो उसने कहा देखो आपके सिर में एक पत्ता गिरा हुआ है, सो यू एक्चुअली हैव लाइक झाड़ो फायर कपड़े एंड ऑल के एक भी पत्ता ना हो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. नहीं, अपना भाई तो अपना ज्ञान देके निकल लिया था. हाँ, तुमको जलील करके दैट वाज, उसको फर्क नहीं पड़ा तुम्हारा बैड लक उसको है, कुछ गुड नहीं, लक है. उसको तुम खुद भी वहां रह जाओ तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा था. Very So cute. वो था. How So long then, did this whole thing take, this walk through the sacred forest हाँ, and all so that? it's a half an hour. So of course बाहर तो plains में you can spend whatever time you want to Correct. spend, but inside का it's around half an hour types, half an hour 45 minutes is what it is. Okay. And then you come out. Yeah. ठीक है. So that's how Very it nice. is. Then we spend more time because हम बाहर आके भी वो plains में फिर हमने वो जंपिंग वंपिंग वाले Very फोटोज लिए, important. Very important. स्कैटर पोजीशन में फोटोज लिए. वेरी तो वो इंपॉर्टेंट. तभी तो अभी रील में रेवती ट्रेंड कर रहे हो जिगर, क्या समझ रहे हो? रेवती you want to share the scatter position? या सब इधर उधर वाला. We have to So basically like you have to एक just रोड में बैठेंगे, one will stand here and there, here and you have there. to just say scatter and then everyone will go in some direction and do something. यही सब की वजह से तुम अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हो जिगर, समझे? So yeah, it was a nice place. अच्छा था. And then from there we went to Cherrapunji. So Cherrapunji is also called Sohra. They also call सोहरा. it. Okay. Yeah, it's a good drive. Beach में एक there's a viewpoint, Makadong viewpoint, which is very nice. तो वो आया तो हमने बोला कि अरे यहाँ पे रुकते हैं ये वो, तो बोले नहीं सर हम बाद में कर लेंगे, मैं करा दूंगा आपको बाद में. तो उसको नहीं करना था तो उसने तब नहीं करवाया. बड़ा हमको समझा दिया उसने. तो उसने बट फाइनली उसने बाद में कराया अभी. तो अच्छा होता क्या था कि मैं लास्ट रो में बैठता था मोस्टली और वो फर्स्ट में बैठा है, और ज्यादातर जो भी ये कॉन्वर्सेशन है कि कहाँ रुकना है ये वो मेरे और उसके बीच में हो रहा है. अब वो फर्स्ट में है, मैं लास्ट में हूँ, और वो फुल पान खा के बैठा हुआ है. और कुछ समझ में नहीं आएगा वो जो बोल रहा है. मकड़ोंग नहीं रुकेंगे सर, मकड़ोंग में भी जाएंगे नहीं. अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है वो क्या बोल रहा है. नहीं तो वो रिटर्न में आना, वो वाडंग फॉल करते हुए हम लोग मकड़ोंग आ जाएंगे. With a गुटखा and pan filled mouth. Oh God. फिर हम लोग हाँ करेंगे. फिर वो दरवाजा खोलेगा, अपने आप को क्लीन करेगा, फिर एकदम से अरे सर मकड़ोंग अभी नहीं जाएंगे, वाइडोंग में होते हुए हम लोग मकड़ोंग चले जाएंगे. अरे भैया तो ऐसा बोलो ना. भगवान. फिर तब एकदम से अनन्या बोलेगी बार बार दरवाजा क्यों खोलते हैं. तो ये साइकिल में चलता रहता है थोड़े टाइम पे. Man, this is so fun. Oh God. Too much. Okay. तो फाइनली फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए सोहरा. So Sohra was very nice. In fact, of course हमने तो काफी कम टाइम स्पेंड किया था, बट जितना हो सके ना उतना शिलोंग में कम टाइम स्पेंड करना चाहिए. I think you should put your base in either Cherrapunji or in Molinong, which are far better places to stay. Really, it's amazing. Like Shillong को of course distance के वजह से Shillong तो आएगा ही, because it's not like Guwahati से वहाँ आते, but जितना हो सके उतना कम टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है.
Okay. We should spend more time in these places. तो हमने वहाँ पे एक होम स्टे बुक किया था. दूसरा क्या, यहाँ पे ना लोग बहुत रिलैक्स्ड होते हैं. जनरली दे आर ऑल वेरी चिल्ड आउट. सब शांति का माहौल रहता है, शांति और अमन वाला. किसी चीज की जल्दी नहीं होती है उनको. तो इसमें इसलिए फिर हम लोग ने वहाँ पे ये होम से तुम लोग वहाँ ने पे हम लोग, ढूंढा कि हाँ, राहुल नहीं ने हमने ढूंढ दिया? नहीं, ये हमने ढूंढा था. ये हमने पहले से ढूंढा हुआ था. इसने इनफैक्ट हमको डेट्स भी चेंज करके दी थी. हमने इसको बुक किया था ऑनलाइन, बट हमारा फिर पूरा प्लान चेंज हो गया, तो डेट भी चेंज हो गई थी. वेरी नाइस. तो दे अकोमोडेटेड फॉर दैट. तो हमारा जो वहाँ पे केयर टेकर था ना, उसका नाम था रिपिंग स्टार. His name is उसका नाम था रिपिंग स्टार. नाम में ही स्टार. हाँ, रिपिंग स्टार उसका नाम था. बहुत ही एकदम नाइव और अपनी दुनिया में मस्त था वो एकदम. सो हम लोग वहाँ पे पहुंचे अराउंड 6:30 बजे के आसपास. अंधेरा ऑलरेडी हो गया था. हो चुका था हम. और इट वाज लाइक अ बंगलो. ओके, वहाँ पे एंटर हुए और वो मेन डोर खुला था और हम घुसे अंदर और कुछ है ही नहीं, ना इंसान ना कुछ. मतलब क्या है, कौन है. तो हो गई 5-10 मिनट. हाँ, हम लोग ढूंढ रहे क्या है, कोई है नहीं. और हम बोल चिल्ला भी रहे हैं कि भाई कोई है, ये वो, कुछ नहीं. तो रिपिंग स्टार का जो रूम था ना, वो पीछे की साइड था. ओके. तो फिर समहाउ मैं पीछे की साइड गया तो मैंने देखा, तो वहाँ पे बढ़िया से ना इंग्लिश गाने बज रहे हैं. ओहो. एकदम वो पुराने स्टाइल के कुछ. तो मेरे को तो पता भी नहीं है क्या बज रहे थे. तो Backstreet. रिपिंग, हाँ, नहीं एकदम वो तो यार हमको और भी पता है. पुराना, एकदम like Beatles and all. हाई क्वालिटी टाइप्स एकदम, जो मतलब वो है. तो रिपिंग स्टार अपना शांति से है ना बेड पे सोते हुए गाने सुन रहा था. मतलब उसको कोई जल्दी नहीं है किसी चीज की लाइफ में. कोई बात इसको बुला आना रहा है, है, कुछ भी आ रहा है, हो रहा है, जो हो रहा है वो होने दो. तो वो मस्त था. देवता टाइप था रिपिंग स्टार. तो मतलब उसको कुछ भी लेना देना नहीं है जिंदगी से, है ना. बट तो नाम इतना यो है एकदम. वाओ. आई नो. बट द गाय वाज वंडरफुल. बहुत ही अच्छा था. 2 दिन हम रहे थे वहां पर. एक दिन उसने बढ़िया ब्रेकफास्ट भी कराया था हमको, मस्त एकदम. एंड वेरी वेरी ये सब लोग जो होते हैं ना, इनका हाई फॉर क्वालिटी इज वेरी हाई. कैसे प्लेट्स रखेंगे, कैसे ये वो, somehow दे आर वेरी. ये सब चीजें ना मैंने देखा शिलोंग में इतना नहीं है. बट व्हेन यू गो टू चेरापूंजी एंड मॉलिनोंग और ये सब, वहाँ पे लोग आर वेरी पर्टिकुलर. They want you to have like a superb experience kinds. यस. तो वो फिर रिपिंग स्टार हमको मिल गया. तो रिपिंग स्टार, और वहाँ पे सब कोई ये एक्चुअली जो ये पान खाने का फंडामेंटा है ना, वो वहाँ पे काफी स्ट्रांग है. मतलब एवरीवन हैज दैट. इनफैक्ट हमने वो ट्राई भी किया था. एक पत्ता होता है वहाँ पे, वो देते हैं वो लोग. वो हमको Not the फिर दिया भी regular था. pan patta. नो, नॉट द रेगुलर पान पत्ता. इट्स अ डिफरेंट पान पत्ता. वो सब खाते हैं वहाँ पे. तो ये भी खाता था रिपिंग स्टार भी. दिस प्लेस वाज वेरी नाइस. इन सोहरा करके इसका नाम है. थोड़ा सा चेरापूंजी से बाहर है, बट नया बना है. तो इसलिए बहुत ही वेल मेंटेन्ड एंड वेरी नाइस. सो हम लोग वहां रहे थे. इट्स वेरी नाइस. एंड वहां पे भी है ना एक वेरी फेमस वेज रेस्टोरेंट है कॉल्ड ऑरेंज रूट्स. Okay. Orange. एंड इट इज एक्चुअली रन बाय ओनली फीमेल्स. तो हाँ, सो वैसा है. एंड मतलब you will, if you Google it, you will see that it's like the number one veg thing to do in Cherrapunji. Okay. तो ये जो जगह है ना, उसका एडवांटेज ये है कि सोराइन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है, सामने ही है. सो इफ यू वांट टू रियली, और प्लस क्या, वो रात को लेट कुछ होता नहीं है, तो इट्स गुड टू स्टे देयर इफ somebody is vegetarian. Okay. So you may be a little far from the center, but then you are closer to the best veg place that is available. Yeah, so that was nice. So we had a dinner at Orange Roots. Lovely, very very good food, freshly made, very nice. The menu is very limited. You will not get everything. Fix है उनका, वही मिलेगा, but the quality is fantastic. Fantastic. भर के मतलब झुंड में लोग आते हैं वहाँ पे, जगह मिलती नहीं है. हाँ, और वो भी 7:30 बजे, या 7:30 बजे बंद हो जाता है. तो ये अच्छा है यार, इनका 7:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है. 7:30 कुछ नहीं है. जब हम लोग गए थे तो फरस we cannot go to bed at 8 o'clock, right? तो हम लोग उसको क्या करे करके we like एक bonfire करो, अपना टाइम पास करो. Yeah. So वो सब अच्छा था. Then we had that day we had a good sleep over there. जगह हमारी बहुत बढ़िया थी. Next day we visited Cherrapunji. So Cherrapunji falls are really amazing. Of course, I think of course we have falls in Maharashtra also, but वो क्या है, वो जो height है, and I think there's a very big difference. Maharashtra में the height is probably
1/4 of the height that is there. This looks like Yeah. kahin se to gir raha hai wala ho jata hai. Exactly. So Gorgeous, yeah. So the Noakhali Fall, the Seven Sisters Fall. We had a lot of good time in Waisodong Fall. वो क्या है उसमें नहा सकते हो आप. You can take a bath and all. Because ये सब खाली देखने वाला है ना. Noakhali and Seven Sisters is more about watching. So Waisodong was good. तो वही हमारे राहुल भाई ने बोला सो वाटरडोंग फॉल ले जाता हूँ आपको बहुत बढ़िया वाटरडोंग वाटरडोंग अरे क्या बोल रहे हो कहाँ ये तो हमने पता ही और तुम पीछे के पीछे हो हमारे तुम चला रहे हो वाटरडोंग ले जाऊंगा तो आपको नौखाली तो जाएंगे लेकिन वाटरडोंग में और मजा आएगा आपको नहीं समझ आ रहा अच्छा 1 मिनट फिर वो दरवाजा खुलेगा सर वाइसोडोंग फॉल ले जाता हूँ आपको नौखाली तो है ही लेकिन वहां ज्यादा मजा आएगा पापा बार बार दरवाजा क्यों खोलते हैं पूरा बोलना पड़ेगा तुमको स्टोरी oh my god that was nice. But the Seven Sisters Fall, do you know that you can actually go to the point जहाँ से वो fall, one of them, one of the 7 वाले, you can actually go to the point जहाँ से वो fall, the water is like falling. So that ऊपर वाला part is like you can just sit there on a rock and chill with your leg on वो the होता है I think, but हमने तो इतना वो explore. In fact, Seven Sisters मेरे को सबसे out of all because पानी नहीं था. This is the time when the water. I think Seven Sisters के लिए ना you need a lot of water. So basically you should go at that time because वो इतना बड़ा है ना. No, for that matter, I had gone in the month of November, so I thought that it is post monsoon, ना तो बहुत पानी होगा. मेरे टाइम में भी उतना पानी नहीं था. तो वो फिर उतना वो नहीं था. But ठीक है अच्छा था. But then Noha Kalika या जो भी नाम है हाँ, that is उसका drive is very beautiful ना. When you drive from to that place, like सब दोनों side में it's just that those plains green and very gorgeous. I remember कि बहुत अच्छा था. Like you will just drive and we saw like a horse grazing in between and all of those things and all. फिर तुमने ऐसा गाना वाना गाया क्या उड़ई? हाँ ये सब किया. ये सब हम लोग गए थे इसके पहले, but मैं ये सब हरकतें तो करूँगी. Very important. So that was nice. I think we had good. Tell us good about time. that Waisadong Falls. That is the one जहाँ पे तुमको like you have to get on that very narrow log वाला So you have to, bridge. there's a log wala bridge to get down and then you go there. And बच्चे के साथ कैसे उतरे? हाँ वो क्या I think इतना कुछ challenging नहीं था वो. I think it was fine. And आर्या लटक जाती है तो she is comfortable. मतलब ऐसे वो देखती रहती है इधर उधर. So उसको problem नहीं हो. Because of course the time taken to get down takes. I mean वो लगता है. She will be fine. How are you guys fine? As the question that because of that log bridge. Otherwise regular stairs are फिर भी अलग. इतना नहीं problem था. I think it was fine. It was not that bad. See, in fact, that's the reason we dropped going to that double bridge. We did not go to the double bridge. Yeah, it's too many steps to walk with. Because it has too many. So that's not possible. So we dropped that. But ये सब तो थोड़ा मतलब reasonable था. So we did that. Of course, double bridge is fantastic, but we had to drop it because of this. Did you guys swim in the water, or was it cold? You did. Yeah, we did. Awesome. मतलब not exactly swim, but yeah, I mean, अच्छा तो higher level of chap chap जिसमें पूरा गीला हो जाओगे types. Higher level of chap chap, very good. हाँ. So beautiful. I loved. मेरे लिए that was like one of the best waterfalls for me. Because like dreamy जैसे आता है, like 2-3 tier it falls down and one small pool in between is very beautiful. It's lovely. It's lovely. Yeah. Then we went to this Maswai cave, which is there. It's lovely. Legendary. It's amazing. मतलब वो जनरली क्या होता है केव जितने भी अपने जाते हैं ना वो सब मतलब बहुत ही लल्लू बनाने वाले केव होते हैं. छोटा सा ऐसा होगा बाहर निकल जाओगे इमीडिएटली कहीं पे भी. मतलब बाहर मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है. Right. बट दिस इज लाइक रियली गुड इट्स लाइक क्वाइट डीप एंड काफी सारा जाना है ऐसे नीचे ऊपर एंड एंड इट्स नैरो और ये वो. उसमें क्या हो गया उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा था कि मतलब कॉम्प्लेक्स तो था बट साथ में फोटो भी खींचना है और वो भी है. लेकिन पीछे वालों का ऑब्जेक्टिव ऐसा था कि अरे यार ये तो फंस गए हम लोग अब जल्दी जल्दी बाहर निकलो. तो वो बार बार धक्का मार रहे हैं अरे नहीं आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ओवरटेक एनीवन और हम खड़े रह के बीच बीच में फोटो खींच रहे हैं ये वो. तो काफी चैलेंजिंग हो गया था. अरे आप आगे नहीं जा रहे हो आप आगे नहीं जा रहे हो. और वी आर लाइक दैट. सो दैट वाज लाइक दैट. ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक पिक्चर्स. या इसमें काफी ऊपर नीचे वगैरह होता है यार. I mean, it's not a very easy walk through. No, it's not. It's not.
And then It's you not. have those stones like हाँ, stalactites hanging हाँ, from the हाँ. top and कुछ things like कुछ that. तो Very कुछ beautiful. कुछ तो इतना नैरो हो जाता है that you have to, you know, like you cannot, like you have to वो Bend and घोड़े go स्टाइल, sideways हाँ and all. घोड़े हाँ. स्टाइल में जाके या you know वैसे सब करके तुमको जाना पड़ेगा. You Hmm. cannot वो तो Yeah, of it's course quite a अनन्या had a lot challenging of, thing. yeah, अनन्या had a lot of fun. उसको तो बहुत मजा आया. आर्या को ना उठा उठा के कैसे भी करके मैनेज किया. पार्सल की तरह वो एक एक बंदा इधर उधर उसको कर रहा था. Passing the parcel, जो आगे बढ़े पीछे से I आपको know, पास कर I लो. know. But हाँ, Ananya must have That had was good. fun, like Yeah, almost, for her it's almost like छुपन छुपाई ना, यहाँ पे yeah, I जाके know. कूद जाओ, उधर करो, वहाँ Yeah, कोने में, yeah, और वो तो yeah, कहीं भी fit हो जाएगी. yeah, I know. It is, So it we only was, have to bend. so Maswai was nice. We had, it's a good cave to go. There's Very nice. another, we could not go. There's another Garden of Caves करके एक है. I've heard I don't about that know. also. It's supposed to be very It's beautiful. amazing. It's amazing. But वो थोड़ा दूर था और हमारे राहुल भाई ने उसको थोड़ा घुमा दिया बातों में हमको, तो हम नहीं जा पाए. But it's worth it. Somebody who's बाद में मैंने realize किया कि we should have gone there. Oh, that's nice. Yeah, even I've heard about it, even Mhm. I've not been there. So we have to Yeah, do second trip. of course. So Meghalaya ke caves are such like they have been. It's a cave because of the waterfalls. The Yeah. way it's formed is because there are so many waterfalls, and that's how the cave is formed. So the Garden of Caves is like multiple waterfalls in between. Yeah, so that was nice. Acha tha. We ended that day there, Hmm. and So most of your days used to so end by वैसा. like 8 p.m., 8:30 p.m. क्या? Yes, yes, because उसके बाद वहाँ पे कुछ करने को है ही नहीं कुछ ना. So करने को then we है used to नहीं. be inside. Yeah, we used to be inside. We used to play with kids, do something. ये वो. अपने गप्पे and all that. Yeah. So ठीक रहता था. Hmm. So then next day we went to Molinong, Hmm. which is, you know, the Asia's cleanest village. Venus Village. Yeah. So it's really amazing. I would say मेघालय के ट्रिप में सबसे ज्यादा दिन वहीं रहो. You know, we Wow. stayed only for one day, but I think it's the best thing. I mean, it's like a mini resort. What? Yeah, It's a town. yeah, it's like a village. The It's very village. small. ऐसा मतलब road है पूरा, and very nice people. Very मतलब ऐसा लगता है कि बस क्या है, chill मारो यार types. बस जाओ यहाँ पे. यहाँ बस जाओ टाइप. तो हम लोगों को लकीली वहाँ का मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द बेस्ट प्लेस इन मोनीलोंग टू स्टे. सो वी हैड अ प्लेस कॉल्ड लारतोंग. वो Okay. एक जो करके बंदा है उसका Hmm. है. Hmm. मैन, इट इज जस्ट अमेजिंग. वो मेन रोड पे नहीं है, थोड़ा पीछे है. Hmm. सो इट्स लाइक अ नाइस लवली कॉटेज विद अ छोटा सा बरंडा टाइप्स. Hmm. एंड कॉटेज में तुम एंटर होंगे ना, उसके बाद देयर इज अ बिग बालकनी which opens to a big jungle. Wow. Okay? तो Jungle. बालकनी से ना तुम्हें बड़े 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 ट्रीज दिखेंगे, मतलब लंबे लंबे ट्रीज. मतलब सोचो तुम बालकनी में खड़ी हो और तुम्हें सामने बहुत बड़ा फॉरेस्ट दिख रहा है विद बड़े बड़े ट्रीज. Wow. नॉट लाइक, यू नो, Yeah. इट्स अमेजिंग. यहाँ पे है ना एक शिलिम करके जगह है, वो Hmm. बॉम्बे में, तुम लोगों ने Yeah, शायद very सुना होगा, famous. सुना Yeah, होगा. yeah, yeah. हाँ, 30-40 हजार Hilton रुपए का Shillong or रूम है. something, no? हाँ हाँ, हिल्टन Hmm. चिलिम. हाँ, 30-40 हजार का उसका रूम होता है. वो उनका भी वही कॉन्सेप्ट है कि तुमको बहुत बड़ा रूम होगा और रूम से तुमको ऐसा फॉरेस्ट टाइप दिखेगा. सी नॉर्मली रूम से तुमको लेक दिखता है, कभी कभी तुमको बीच दिखता है, यू ऐसे नो कुछ रिवर होता है. दिखता है, बीच दिखता है ऐसा. बट ये मतलब नेक्स्ट लेवल टाइप का वो दिखता है. तो सो दिस इज लाइक माइंड ब्लोइंग. जो इज ऑफ कोर्स माइंड ब्लोइंग. उससे अच्छा सिंपल प्यारा बंदा तुम्हें नहीं मिलेगा जिंदगी में. सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस. मुझे लगता है 3-4 दिन रुकना चाहिए एंड यू कैन पुट दैट एज अ बेस. भले वहां से ट्रैवल करने में शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे चीजों को देखने के लिए, बट इट इज मैनेजेबल. बच्चे हैं वहां पर. सो इट्स अ विलेज विच हैज, यू Okay. नो, लाइक किड्स एंड ऑल. सो किड्स रोड्स पे घूमते रहते हैं. तो हमारे बच्चे तो उनके साथ ही खेलने लग गए. यू How नो, sweet. शाम को Wow. खेल रहे हैं वो लोग, दौड़ रहे हैं, ये है वो है. एंड How अच्छा, lovely. वहां पे है ना 8 बजे बंद नहीं होती है चीजें. Of all the places in Meghalaya, Molilong is open very late because it's that just one street and one village. तो lights होगी, वाह. ये होगी, 10 बजे तक तुम्हें रौनक मिलेगी. अरे वाह. So That's even the interesting. restaurants and everything Small is, little place. yeah, Wow. Very it's nice. amazing. It's I would say it's the highlight of Meghalaya trip. There's nothing better than Molilong in Meghalaya. So Wow. you should spend more and more days in Molilong. See, there's a road, दोनों साइड पे उनके घर है. Hmm. एकदम क्लीन है. Very lot of flowers, lot of trees.
जैसे तुम सोचो ना रिसोर्ट में घूम रहे हो तो कैसा होगा, Like amazing उस लेवल vibes. का उस लेवल का क्लीनलीनेस, बट देन यू नो दिस इज नॉट अ रिसोर्ट, दिस इज अ विलेज. This is सो a village itself. This is true. सो Wow. पीपल आर वेरी नाइस. एक कामनेस वाली फीलिंग है. जैसे रेस्टोरेंट में भी वहां पे है ना, तुम ऑर्डर करने जाओगे वो बोलेगी 1 घंटे बाद मिलेगा, मतलब बिकॉज दे विल मेक अच्छा, एवरीथिंग they have to फ्रेश. make it, हाँ, हाँ. from सो हाँ procuring to हाँ making हाँ everything वो हाँ तभी होगा. हाँ. सो वो इतना फ्रेश है तो खाने का भी मजा अलग है, रहने का भी मजा अलग Oh, है. nice, मतलब beautiful. Wow. चिलैक्स का नेक्स्ट लेवल है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है चिलैक्स का. सो Very nice. एंड दिस हाउस इज अमेजिंग जहाँ पे हम रुके थे ना. तो आई रियली फील दैट इट इज अमेजिंग मॉलिनॉन्ग. Okay. ऑफ कोर्स जब हम मॉलिनॉन्ग में थे तो हम लोगों ने वो सिंगल लिविंग ब्रिज भी देखा, सिंगल लिविंग रूट ब्रिज. Root सो bridge, yeah. सो जो डबल वाला इज नियर चिरापुंजी व्हिच वी Correct. कुड नॉट सी, बट देयर इज अ सिंगल वाला व्हिच इज नियर मॉलिनॉन्ग. इट्स वेरी इजी टू गो. छोटा सा ट्रैक है टू रीच देयर. इट्स अ वंडर. मतलब तुमने तो शायद डबल वाला भी देखा होगा. I have been to double one. It's Yeah. very strenuous. Like तुम चालू कर रहे हो, तुमको लगेगा हो चुका है, but 3,500 steps one way is the way to the double root bridge. Yeah. And it will take you, मतलब तुम you're just like maybe 1000 किया होगा, तुमको लग रहा है हो चुका है, पूछो कि भैया और कितना है, मैडम आधे भी नहीं आए हो अभी तक. like उतरने में 1 घंटा, ऊपर जाने में तो 3 घंटा वगैरह लग जाता है. बट oh my god, like what an experience it is. You know, walking, you can actually walk on both the levels of the bridge. And I don't know but about the single one, but this double one was it's a rubber tree का जो roots है जिसको वो लोग बांध के bridge बनाए हैं. So you're actually walking on the bridge. उसके नीचे के पानी में also you can jump, and because थक के आते हो, मैगी मिलता है वहां पे अच्छा गर्मा गर्म, and you can chill by the water, have a maggie, do a small swim, and they have like a setup there where you can go and change your clothes and all that as well. So it was really nice. So the double route, but it's very strenuous, but 100% recommended. तो जब you know आर्या थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और second trip पे करेंगे तब you can do the I know. So you are very right. In fact, the single one is also very nice. मतलब imagine that वो roots से bridge बना है. I mean वो सोच के वो देख के, so that's also a big highlight. वहाँ पे of course फोटो वोटो खींचने का तो अलग ही मजा है. पानी है नीचे, तो पानी में हम लोग ने नहाया नहीं, but we kind of पाँव and थोड़ा बहुत चप और वो सब किया. So that was nice. So it's definitely amazing. मतलब क्या होता है कि see waterfalls or a beach or this thing you see everywhere. It's too unique. Of course, this is too unique. You cannot find something like this anywhere else in any part of the country. तो बहुत ही amazing है वो. और yeah, because when you see it now, it doesn't, जब देख रहे हो तुमको लगेगा नहीं कि it can actually hold your weight and you can walk, or hold my weight के to help. हम लोग सब 6 या 7 जन walking on that bridge, सब photos वगैरह लिए थे. So it was solid. ये बार I don't know. So Revati, I don't know the double bridge का कितना, ये तो बहुत बड़ा है. So इसमें तो एक टाइम पर उधर बहुत सारे लोग होते हैं on this bridge. It's not like some 6-7 people. There'll be like, there's no restriction. It's like a bridge. Like normal bridge में कैसे एक साथ से मतलब 20-25-30 लोग, Solid. So there is no restriction. It's like that big. So it's amazing. It's really a wonder of the world, to say so. Yeah, it's a natural wonder. सच्ची में it's a natural wonder. This living root bridges is really natural wonder. मुझे सुनने में आया तुमने एक फोटोग्राफी ब्लंडर भी किया उधर. नहीं, वहाँ पे ब्लंडर, उसमें क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे गए थे ना, तो देन हम लोग वो फोटोज खींच रहे थे, तो हमको एक यंग सा बंदा मिला, उसको हमने फोटो खींचने को बोला. तो अभी एक कुछ ये कि नया स्टाइल होता है, वो पैनोरामा करके ना ऐसे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, करेक्ट, ताकि क्या वो वर्टिकल में पूरा आ जाए. तो ये एकदम हमारा फोटो तो बढ़िया है, तो हमको लगा ये तो मस्त है. तो फिर वहां पे जितने भी लोग आते थे ना, उन सबका मैं खींच रहा था. अरे नहीं, मैं आपका खींच देता हूँ, मैं आपका खींच देता हूँ. बट उसमें क्या होता है, योर हैंड हैज टू बी स्टेडी. अगर तुम्हारा हैंड स्टेडी नहीं होगा ना, तो तुम्हारा फेस पूरा ऊपर नीचे हो जाता है. करेक्ट. तो मुझे लगता है इतने सारे लोगों ने ना, सबने मुझे घर जाके बहुत गाली दी होगी अपने होटल्स में जाके, एलियन लग रहे होंगे. मैं सबका मतलब हाँ मैं खींच देता हूँ. ये लोग भी परेशान हो गए, अरे यार तुम अपने फोटो खींचो ना यार, बैठो, तुम जो भी आया सबका फोटो खींच रहे हो. तो मुझे लगता है उसमें से एक भी फोटो सही नहीं था. तो सब के सब मुझे गाली दे रहे होंगे. बट एनीवेज कोई बात नहीं. तो ठीक है, but the place is lovely. It's a wonderful place, and I feel that
कुछ भी छोड़ो लेकिन ये मत छोड़ो अगर वहां जा रहे हो तो you should definitely go there. Of course if you've done double bridge then ठीक है, सिंगल ब्रिज छोड़ सकते हो, but otherwise मॉलिनोंग के एकदम पास है, so it's worth it. You should Nice. go there. What about Yeah. that waterfall that you said, Wahakaba Falls or something? That was on the way. Wakaba Falls was on the way. When you go from Cherrapunji to Molinong, it is comes on the way. So it's also a nice fall. आप बैठ सकते हो थोड़ा, you can take a bath and all. So we Oh, stopped over lovely. and chill karo. The water is nice, not very dangerous, so the kids can do it easily. Oh, very nice. वो नहीं है. So Yeah. it is nice. It's a nice And fall to go to. Okay. कि प्लस क्या है कि आपका जर्नी है तो it is a good stop in between, because Yeah. from Cherrapunji to Molinong is far. The roads are not that great, so Like it how takes around far? 3.5 hours लगता है. 3-3.5 घंटा लगता है. तो बीच में stops लेना अच्छा है, and this is one of the Yeah, good stops. this is one of the good stop. Very nice. And then from here is when you went to Doki. Yeah, so that was not that great actually, because Doki में क्या है, if you are not during the right time, वो crystal clear water दिखता नहीं है. So I think the right time is only from November to Jan. Correct. ऐसे कुछ बोलते हैं. हाँ, rest of the time it is like any normal other river. Plus क्या वहाँ पे ना गर्मी काफी है. So we didn't have a good time. मजा We नहीं आया. immediately मतलब छोटा सा आधा घंटा बोट करके हम लोग निकल लिए वहाँ से. Because गर्मी थी, पानी एकदम गंदा था, very crowded. तो very crowded also. वो It is कुछ so खास नहीं famous है for unless you go. boating. Unless you go in the peak season. Yeah, because of that crystal. हाँ, so crystal clear water का boating का मजा है, but वो तो अभी तो बहुत ही गंदा है, मतलब at this point of the time. So I think if I do this again and if I'm not going in November to Jan, I will not even go to Doki. मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे. It's not worth it. Yeah. So, but yeah, बांग्लादेश का border है, वहाँ से दिखता है. बांग्लादेशीज वहाँ पे आके अपना झालमुड़ी बेचते हैं. Yeah, I know. तो झालमुड़ी खाने का. तो इधर में हम लोग जब गए थे, talking of 10 years back, we did not really realize कि तुम बांग्लादेश के पास हो. मतलब of course everyone tells you बांग्लादेश के पास हो and all that. तो मेरे husband के फोन पे बांग्लादेश का whatever नेटवर्क लग गया. Yeah, and उसका नॉर्मल सब कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया. तो he got all his good morning messages, सब कुछ मिला. एंड में जब बिल आया, he got, because international roaming का solid बिल चढ़ गया था उसके फोन पे. और we didn't even realize. And then we called up कि why is our bill so high this time, and then they said you were on Bangladesh international roaming. So वो सब nonsense भी हुआ था, because we were just, Bangladesh border is right there, because Doki river flows into Bangladesh. It's like right there. हाँ, जैसे तुमने कहा झालमुड़ी आके बेचते हैं. So you're right there. वो पैसा भी मांगते हैं टका में. उसने गलती से मुझे ऐसा बोल दिया 20 टका. मैं बोले टका तो है नहीं. तो बोले नहीं उसको फिर नहीं रुपया दे दो. झालमुड़ी तो मैंने खाया है. तो मेरे को तो बहुत पसंद है झालमुड़ी. उसमें वो मस्टर्ड का टेस्ट मस्त आता है. हाँ, मुझे बहुत लगता है. Awesome. So that was your entire Molinong experience. Doki also was from Molinong only, right? Yeah. So then it was on the way. So that was like, we go from Molinong to Shillong, and on the way, like we go to Doki, and then also this another fall called Krangsuri. Okay. So this is like a new fall, okay, which is they have discovered, which is on the western side थोड़ा. It's a very good fall. और वो ऐसा बड़ा सा फॉल जो बाद में ऐसा नीचे ऐसा पॉन्ड जैसे में होता है. So वो पॉन्ड में तुम नहा सकते हो. You can take a bath. Wow. So they actually give you life jackets. Wow. So it is like so well planned. मतलब वहाँ पे you get a life jacket, you take your life jacket, and then you take a bath. That's how it is. Beautiful. So even people who cannot, who don't know swimming or not comfortable. Yeah. So where is Krangsuri? Like, how do you reach this waterfall? So basically, from Dauki, when you go to Shillong, I think there are a couple of routes. If you take one route, it will not come. But if you take the other route, I forget the name. So वो route अगर लोगे ना, तो Krangsuri will come. Awesome. So this was on your way back to Shillong. Yes. Did you guys, so off Shillong, I think it's some 1 hour or 2 hours or something from Shillong, there is this one village called the Whistling Village.
village का नाम कुछ और है. I think it's called the Kong Thong village. It's a whistling village. The funda of the village is that every person does not have a name. Like किसी का नाम जिगर रेवती ऐसे नाम नहीं है. सबका नाम is a musical melody. Like ooh, ah. सबका नाम is a musical melody. So it has, the village apparently has about 600-650 people. So there are 600-650 unique tunes because they call each other with that kind of tune. सबका नाम वो है. So apparently जब बच्चा पैदा होता है मम्मी के गोदी में आता है and the mom at that time she thinks, oh, I like this particular tune, and that's how she names the child. It's apparently very, very beautiful village, whistling village of Meghalaya. It's pretty famous also. चलेगा तुम्हारा अगला ट्रिप में, you can add this also. Yep, why not? ये हमको मिला नहीं था, मतलब nobody spoke about this also, and I think maybe देखा नहीं था इसको, but yeah, sounds interesting. Yeah, sounds very interesting. Yeah. तुम लोग गए थे क्या? नहीं, हम लोग नहीं गए थे. This is something that I have read about. So I was Later looking at places that we can go off Shillong and all that, and this one came up as just it's a day, kind of almost like a day trip, but you can go and stay there. They have made homestays, but very, very rustic kind of homestays where you can go and experience and talk to those people and all of those things. Yeah, so then we reached Shillong, and then I mean that was the last day. So like then it was more about going to Guwahati. So we went to have that lunch which we missed in the trattoria. मतलब Legendary 1 था. बजे. Legend, बहुत ही legend, amazing. I think it's the best thali that you can have in Meghalaya plus Assam, at least you know the places that we visited. And शशांक ने तो 2 थाली खाई, मैंने भी almost 1.5 थाली खाई. Are you serious? बहुत ही मस्त. ये वही सब वो बनाना, फ्लावर का सब्जी and दाल, अलग अलग चटनियाँ, and सूखा भाजी होगा एक, you know, which is of aloo plus whatever some beans and all. It's lovely. It's really a delight to have that thali. Awesome. Did you meet that owner जिसने तुम? No, he was not there. He was not there. But phone पे बात हुआ उससे वापस. So he said, हाँ आप लोगों ने, मैं बोला हाँ खाया मजा आया. So वो सब हो गया. So trattoria was nice. It's highly recommended. मतलब of all the things, I definitely recommend having a thali at trattoria. And of course, if you're non-vegetarian, तो मतलब I think it will be even, because there are a lot of options: fish and chicken and pork and you know all those things. Balle. Fantastic. So that was very nice. And then फिर वहाँ से, so this was, we had left the hotel and we had lunch and we went to this museum, Don Bosco Museum. It's very nice. It's a full 5-floor ka museum. Wow. Where you get all the information about Northeast, not just like Meghalaya, all the 7 states. And very well made, very informative. You know, if you have kids with you, they'll learn a lot. You know, about their culture, their various tribes, dresses, weapons, ornaments, you know, their food. Very thorough museum. Very thorough museum. Very मतलब 5 floor का म्यूजियम है. And ऊपर भी बहुत मस्त है. So म्यूजियम के ऊपर है ना, there is a open air walk. So from there you see the entire Shillong. That's also very nice. वहाँ बैठ के आप coffee पी सकते हो. And so it's lovely. मतलब it's worth it, you know. Oh, lovely. Very nice. Yeah. So that open air walk is also very nice. That's a Don Bosco museum, you said. Yeah. Okay. So, and it's a little outskirts. So maybe while you are entering Shillong or while you are exiting Shillong, you can do it. Okay. You know, that will be far more logistically, will make a lot of sense. Fantastic. So वो अच्छा था. And yeah, that's, I mean, then we reached Guwahati. Acha. So we had a early morning kind of flight. हम लोग पहुंचे. तुमने राहुल को बाय बाय करके. Yes, राहुल को बाय बाय किया. उसने मेरे को और एक झोल दिया. मुझे बिल चाहिए था because I wanted to claim LT है. Correct. तो उसने बोला कि हाँ सर हो जाएगा मैं आपको दे दूंगा. एंड टाइम तक वो करता रहा. फिर लास्ट में बोला सर मैं भूल गया, मैं आपको कुरियर कर दूंगा. अभी आज तक कुरियर आया नहीं है उसका. राहुल तो मस्त आदमी है. उसके लिए नॉनसेंस बोलने नहीं सकता. डूड है. राहुल इज अ डूड. या ना मोटा मोटा आ जाएगा तुम्हारे पास. जगह मोटा मोटा आ जाएगा. मोटा मोटा बिल भी दे ही देगा वो कभी ना कभी. चिंता नहीं करने का. Rahul has a big highlight in our conversation today. Yes, of course. So it was a nice trip. I think must था. And काफी मजा आया हम लोगों को. मतलब you know, नॉर्थ में काफी बार घूमते हैं हम लोग. तो इधर मतलब मैं सिक्किम गया हूँ, बट
उसके अलावा ज्यादा trips नहीं की है. This was only the second trip to this part of the country. Yeah. Like north में, we all do like whatever 10-12 trip हो गया होता है अलग अलग. Correct. हिमाचल, उत्तराखंड, ये वो कश्मीर चले गए, यहाँ चले गए. So I think यहाँ पे ज्यादा जाना चाहिए. One of my big takes from this trip was that यहाँ पे भी बार बार जा सकते हैं. It's not a one trip thing. You can do this again and again in different parts of Northeast. So yeah, I totally agree. It's a mix of chill and ghumna both, right? So you can chill in that place. You can go to see so many waterfalls. Cave में जाओ, ये करो वो करो. It's like everything mix of all jazz is there. Fab. जिगर यार बहुत ही मजा आया. All your कहानियां and क्या क्या किया and पापा ये दरवाजा बार बार क्यों खोलते हैं? वो सब टाइम पास बड़ा मजा आया. Thank you so much. And as always, मुझे तो भयंकर FOMO हो गया. I have to go back to these places again. है ना? Yep, no, it was really fun. It was good to talk about, the smaller things that you do on travel, the people that you meet, because it's not always about, the destination, but it is more about, the characters that you come across and the journeys that you travel. So it's fantastic, just recollecting all that. So yeah. We totally enjoyed your stories too, and for an expert traveler, and so that really helped in our bucker. Yeah, absolutely. Like I promised, this has been a hilarious conversation. Thank you, Jigar. And now for our listeners. I'm sure you want to read up on Jigar's awesome itinerary, the fabulous homestays where he stayed in, his favorite restaurants, and of course the legendary Rahul Bhai's contact details. And to read up all these along with pictures from the trip, quickly head on to our blog, Sneaky Footprints, details of which are in our show notes below and in our Instagram page as well. Yep. All right. Thank you so much for your time. Bye-bye. Bye-bye. Thanks, Jigar. Bye, Godly. Bye. So, in case you're still wondering, we are Misadventures of a Sneaker, a travel podcast where our sneakers take you everywhere, from breathtaking landscapes to quirky roadside attractions. Yo, do follow our Instagram page, Misadventures of a Sneaker. We put lots of things there. Recommendations, photographs, stories, experiences, and a lot more. And you can also drop us a DM there with a lot of your suggestions, places that you want our sneakers to take you next, and lots more. All details are in our show notes. And do not forget to give us a 5-star rating on Spotify. We'd be thrilled to see you on our next adventure. You mean misadventure? Yeah. Our sneakers will take you on the next misadventure. So see you soon. Bye-bye. Bye.